we are starting today's lecture by solving doubts of some of the students of the previous homework. So from miscellaneous exercise 2A, question number 5, this was doubt for some of the students, so I'm solving it here. Okay, so the question says find A inverse using, so we are supposed to find A inverse using row transformations. So it is clearly mentioned what kind of transformations we have to use. So that will be mentioned here. If it is row transformation, A has to be pre-multiplied. If it is column transformation, A has to be post-multiplied. Okay. And one more thing we need to note here is what they have said is A is a non-singular matrix, which obviously tells us that determinant of A is not equal to 0. For a singular matrix, determinant is 0. For a non-singular matrix, determinant is non-zero. So determinant is not equal to 0. We already know that now. Non-singular, non-zero determinant है इसका already हमको उन्होंने दे दिया है. And now we are going to find out A inverse. Now, why this condition of determinant not equal to 0 is important to us, you'll come to know as we move forward in the lecture. Okay, so right now what I have to do is I have to use a definition where I have to say A into A inverse is I, the identity matrix, and here it is 3 by 3. Generally we are going to deal with the matrices 3 by 3 matrices of the order 3, square matrices of the order 3. So here it is again a 3 by 3 matrix. So A into A inverse is an identity matrix of order 3, and then we have x 0 0 0 y 0 0 0 z getting multiplied to A inverse. A is pre-multiplied, and we are going to get an identity matrix here 1 0 0 0 1 0 0 0 1. That's an identity matrix. Okay, now once this is done, we are going to use row transformations and convert this pre-multiplied matrix to I. How do we convert that pre-multiplied matrix to I? I showed you the procedure the last lecture. First you convert this to 1, then using that 1 नीचे 0 लेके आना है, ऑलरेडी 0 है. फिर हम लोग यहाँ पे सेंटर पे जाएंगे, उसको 1 करेंगे, ऊपर नीचे 0 लाएंगे, and then we go to the last element A33, make it 1 and make the 0, the elements above it 0, equal to 0, right? But the thing here is we won't be able to use row 2 to convert this x to 1. ये x को 1 में कन्वर्ट करने के लिए आप रो 2 का यूज नहीं कर सकते because already the elements here are 0. So we can't use any of those elements to make x 1. So एक ही रास्ता बचता है. The transformation which we are going to use is by row 1, you divide row 1 by x. Okay, then you divide row 2, which is independent of row 1 right now, by y. रो 1 में जो चेंजेस आने वाला है वो रो 2 को अफेक्ट नहीं करेगा, तो रो 2 को अलग से अपन पूरे को y से डिवाइड कर देंगे. एंड रो 3 वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय z. हम लोग तब तक ये रोज साथ में लिख सकते हैं या साथ में उनके ऊपर काम कर सकते हैं जब तक दे आर नॉट अफेक्टिंग ईच अदर. सो राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन रो 1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ रो 2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ रो 3. सो आई हैव टेकन ऑल द 3 रोज टुगेदर, and what I'm going to do is I'm going to divide each row by x, y, z respectively. तो उससे क्या होगा? जब पहला रो हम लोग का x से डिवाइड होगा, आई रिपीट, जब पहला रो हम लोग का x से डिवाइड होगा तो यहां पे आएगा 1, 0 by x is 0, 0 by x is 0.
सामने भी ऑब्वियसली डिवाइड होगा बाय एक्स, सो व्हाट वी गेट इज 1 बाय एक्स 0, 0 बाय एक्स 0. सिमिलरली जब दूसरा रो y से डिवाइड होगा तो व्हाट विल गेट इज 0 1 0, देन वी हैव 0 1 by y 0, and then the last what we have is row we are going to divide it by z, so 0 0 1 0 0 1 by z, right? So ये तो हो गया I, this is now I, so I into A inverse is going to give you A inverse, so I into A inverse हम लोग को सीधा देने वाला है क्या, A inverse, और A inverse फिर हम लोग को क्या मिल रहा है, what A inverse are we getting, what is A inverse, if you see clearly it is 1 by x, 0 0 0 1 by y, 0 0 0 1 by z. Very simple straightforward problem. रो ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करना है इसमें, बट बहुत सिंपल है. डायरेक्ट व्हाट यू हैव टू डू इज डिवाइड बाय x, डिवाइड बाय y, डिवाइड बाय z, डिवाइड रो 1 बाय x, डिवाइड रो 2 बाय y, डिवाइड रो 3 बाय z. खत्म हो गया. Okay, so that is how A inverse you're going to get 1 by x 0 0 1 by y, and the other elements are 0 in the row 2 and 1 by z in row 3, and the other elements are equal to 0. So now for all the diagonal matrices, what is this matrix? It has only diagonal elements as non-zero, बाकी सब यहाँ पे 0 है, तो ऐसे matrix को हम लोग क्या बोलते हैं, diagonal matrix, right? So diagonal matrix है ये, and all such diagonal matrices, you can remember this as a shortcut, that A inverse is reciprocal of the diagonal elements. A inverse is also a diagonal matrix with reciprocal of diagonal elements. I repeat, in all the diagonal matrices, you can remember this as a shortcut. If A is a diagonal matrix, then A inverse is also a diagonal matrix with reciprocals of diagonal elements. A inverse is also a diagonal matrix. If A is a diagonal matrix, A inverse is also a diagonal matrix with reciprocal of diagonal elements. Okay, so therefore यहाँ पे एक hence करके question है, right? So we have this question, hence find A inverse of, this is a diagonal matrix. So अभी हम लोग बात कर रहे थे, just now we are discussing, और यहाँ पे आपको screen पे you are able to see the result also here below down here, see there is a result here. So diagonal matrix है, inverse ऐसा दिखेगा, inverse भी diagonal matrix रहेगा. So यहाँ पे first you have to check whether the matrix is a non-singular or not. So हम लोग determinant जब find करेंगे तो determinant जो है वो यहाँ पे आपको normally find करना है, कर सकते हैं प्लस माइनस प्लस करके, बट डायगोनल मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ही होता है. आई रिपीट, डायगोनल एलिमेंट्स का जो डिटरमिनेंट है, डायगोनल मैट्रिसेस का जो डिटरमिनेंट आता है इज द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स. यू कैन ट्राई इट बाय सॉल्विंग प्लस माइनस प्लस, जैसे अपन ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं वैसे आप कर सकते हो. You can try by that also. वही आने वाला है obviously. It is going to be product of diagonal elements 2 1 minus 1. You're going to get minus 2, which is non-zero. Therefore inverse exists. I repeat, diagonal matrices में डिटर्मिनेंट अगर आप प्लस माइनस प्लस नॉर्मल तरीके से करोगे तो भी चलेगा, बट अगर आप वैसे करोगे तो भी आपको पता चलेगा कि डिटर्मिनेंट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट ऑफ दीज डायगोनल एलिमेंट्स व्हिच इज कमिंग एज -2, which is not 0, and therefore A inverse exists. And if A inverse exists, you can see it on the screen. The result is, if A inverse exists, the result is reciprocal of diagonal elements. A inverse is reciprocal of diagonal elements. Okay, so this is how the A inverse will look like.
You can use this result as shortcut while doing MCQs. If A is a diagonal matrix, A inverse is also a diagonal matrix with diagonal elements का reciprocal. Okay. Determinant of diagonal matrix is product of diagonal elements. Determinant of diagonal matrix is product of diagonal elements. You can find normally also determinant. Okay. So the next question, which many of the students have asked me the doubt, is find inverse of cos theta minus sin theta 0, sin theta cos theta 0, 0, 0, 1. Okay. The procedure is again, सबसे पहले हमको क्या करना होगा? We'll have to convert this to 1. इसको 1 करना है, right? And then इस 1 को यूज करके यहाँ पे नीचे के एलिमेंट्स को हम लोग को 0 और 0 में कन्वर्ट करना है. Okay, that is the procedure, right? So to convert that first element to 1, इसको 1 करने के लिए, वहां पे 1 लाने के लिए, A11 that is first row first column element को 1 करने के लिए I'll be using identity. The identity is cos square theta plus sin square theta equal to 1. So identity use करना है मुझे. So how will I use that identity? First I'll say by we'll say the change is in R1, right? And no, before this we are going to find the determinant of A. So before starting to find inverse, you'll have to show this step. Though generally determinant जो है वो non-zero ही आता है, but still whether the matrix is invertible or not, whether A inverse exists or not, what you have to do is first find the determinant. Okay, so determinant find करना हम लोग को cos minus sin 0, then we have sin cos 0, 0, 0, 1. Okay, so first what we are going to do is we are going to find the determinant of this matrix, and if the determinant is coming as non-zero, then we can proceed with the inverse. So plus minus plus, what we have is cos theta, then we eliminate first row first column, फिर यहाँ पे आएगा cos theta minus 0, which is again cos theta. Negative negative क्या हो जाएगा? Positive sin theta. Eliminate first row second column, हम लोग को मिलेगा sin theta minus 0, which is sin theta plus 0. So finally what you are getting at is cos square theta plus sin square theta. What is cos square theta plus sin square theta? 1, which is the proof that we have a non-singular matrix at hand here, and this is non-zero, and therefore we can say A inverse exists. So the first step is always to find the determinant of matrix A. Once you find the determinant A, we found the determinant is not equal to 0. It is a non-zero matrix. It is a non-singular matrix. Then you can go forward and find the inverse of A, right? And to find the inverse of A, what I'm going to use is I'm going to use A into A inverse as I. If I'm going by row transformations, and they have said here that हम लोग को A inverse find करना है using row transformations. तो अगर आपको row transformations use करना है तो आपको A को pre-multiplied position पे रखना होगा. Okay, so A into A inverse is I, and then I can start the procedure. We have cos theta minus sin theta 0, sin theta cos theta 0, 0,
0 1. Okay, then we have A inverse, और फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Okay, so first step is to find out determinant of A. Determinant of A आया non-zero, A inverse exists. Then I multiplied A in the pre-multiplied position. I am taking A into the reciprocal of A's I, and then we are going to find out A inverse. I am writing cos theta as C, sin theta as obviously S, but that is not allowed while writing in the board exam. You write it in full. Okay, you write full cos theta, sin theta. Okay, now first इसको 1 करना है, बराबर. वहां पे 1 लाने के लिए द प्रोसीजर विच आई एम गोइंग टू यूज इज रो 1 में चेंज आएगा, एंड द चेंज विल बी cos स्क्वायर थीटा चाहिए, तो cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय रो 1 प्लस यू विल टेक sin थीटा इनटू रो 2. ओके, cos थीटा इनटू रो 1 प्लस sin थीटा इनटू रो 2. नाउ व्हाट यू विल गेट because of this, the change in row 1. Okay, बाकी elements जो है मेरे जो unchanged है, I will first write them down because वहाँ पे mistake का chances फिर reduce हो जाता है. So the change is going to be only in first row. बाकी जो rows है वो हम लोग का unchanged है. Okay, then we have 0 1 0. Yeah, so what is the transformation which I'm going to use? I'm going to make the use of identity to get 1 there, and the transformation, the change will be, you're going to multiply this by cos, तो वहाँ पे cos square हो जाएगा, and then sin theta into रो 2, तो sin square आएगा, and then we are going to have cos square plus sin square. So first रो में फर्स्ट एलिमेंट रहेगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर. अगेन cos थीटा मल्टीप्लाइड टू रो 1, तो ये हो जाएगा माइनस sin थीटा cos थीटा. sin थीटा मल्टीप्लाइड टू रो 2, तो ये हो जाएगा sin थीटा cos थीटा. सो हम लोग को मिलेगा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा. ओके, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे रहेगा 0 इंटू कॉस थीटा प्लस 0 इंटू साइन थीटा, विच इज गोइंग टू बी 0 अगेन. ओके, 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा प्लस 0 इंटू साइन थीटा आपको देने वाला है यहाँ पे कॉस. 0 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा आपको यहाँ पे देने वाला है साइन थीटा, और यहाँ पे वापस आएगा 0. ओके, so then I can say इधर आ गया है 1 0 0 sin cos 0 0 0 1. A inverse equal to cos sin 0 0 1 0 0 0 1. Okay, so the next thing which we are going to do is, now we are going to make use of this 1 to make the elements below it 0. Okay, ये वाला तो ऑलरेडी 0 है, इसको 0 करना है. उसको 0 करने के लिए बहुत ही सिंपल स्टेप रहेगा. बाय द चेंज विल बी इन R2 this time, and the change will be R2 minus sin theta into R1. R2 minus sin theta into R1. So what are we going to get is, okay, the 1 0 0 unchanged, cos sin 0 unchanged, 0 0 1 0 0 1 ऐसे ही रहेगा. What we are going to do is we are going to multiply this by sin theta and subtract it from R2. So sin theta minus sin theta तुमको देगा यहाँ पे 0, cos theta minus 0 हो जाएगा cos theta, 0 minus 0 हो जाएगा यहाँ पे 0.
so that is not going to change here. 0 minus sin theta into cos theta तुमको मिल जाएगा minus sin theta cos theta. 1 minus sin theta into sin theta दो बार आएगा वहां पे, तो 1 minus sin square theta आएगा. And 0 minus 0, you're still going to get 0. Let me repeat this row again. It is going to be 0 cos 0 minus sin theta, 1 minus sin square theta, and 0. Okay. So before going to the next step, let us simplify this. Okay. So क्या मिलेगा हम लोग को? यहाँ पे मिलने वाला है 1 0 0 0 cos 0 0 0 1 into A inverse equal to, what you're going to get is cos sine 0 minus sine cos square 0 0 0 1. Okay, so we are going to get cos sine 0 minus sine cos square 0 0 1. Okay, now we are just one step away from getting the inverse. Okay, can you tell me what is that step? Yes, we have to convert this to identity matrix, and therefore we are going to now focus on this cos here. That cos has to be removed, and only one option we have. We're going to remove that cos directly by using division. Okay, so we are going to remove that cos directly by using division. That will be by rho 2 divided by cos theta. We are going to divide rho 2 by cos theta, and once we do that, यहाँ पे आएगा 1 0 0, फिर आएगा 0 1 0 0 0 1 into A inverse equal to, we're going to get cos sine 0. Then next we are going to divide by cos, so divide by cos करने पर यहाँ पे आएगा minus sin cos 0, right? रो 2 को cos से डिवाइड करना है, 0 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा minus sin cos 0, और लास्ट में रहेगा 0 0 1. So therefore this is I into A inverse is A inverse, and we have the final answer as cos sine 0 minus sin cos 0 0 0 1. Okay, so that is what the inverse is. So again, if I revise the sum, we started with 8. We started with finding the determinant फाइंड किया, 1 आया, A इनवर्स एग्जिस्ट, फिर रो ट्रांसफॉर्मेशन है इसलिए A इज प्री मल्टीप्लाइड A into A inverse is I. Okay, and then we started with the procedure, इसको 1 में कन्वर्ट किया by using cos square plus sin square. Okay, so then we multiplied this by sin, then R2 में से उसको subtract किया, R2 minus sin theta into R1. So उससे हम लोग को यहाँ पे 0 मिल गया, 0 cos 0, सामने we get minus sin theta cos theta, 1 minus sin square theta, and 0. Then what we did is we divided by cos theta. Okay, we divided by cos theta, and when we divided by cos theta, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे minus sin theta हो गया, minus sin cos का minus sin theta हो गया, cos square का cos theta हो गया, 0 0 रहेगा. That is the A inverse. Now the same A inverse we have to achieve
by column transformations, right? That was the 8th sum in the textbook. So we are going to use column transformations this time and we are going to find out A inverse. पहला हमेशा ये स्टेप रहेगा कि we are going to find out determinant of A and determinant of A जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, दो ही A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वो हम लोग ने इस सम के लिए आगे कर दिया है. So now I'm just going to show you the column transformations to find out A inverse of this matrix. Okay, column transformations के लिए आपको करना पड़ेगा A inverse into A as I. Column transformations के लिए हम लोग करना पड़ेगा A inverse into A as I. So A will be post multiplied. Post multiplied matrix में ही हम लोग column transformations कर सकते हैं. So we have cos theta minus sin theta 0, sin theta cos theta 0, 0, 0, 1 is equals to I, and the matrix I is 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 and 1. ओके, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस में हमें सेम चीज करना है. यहाँ पे हम लोग को 1 लेके आना है, बट यहाँ पे हम लोग को 1 लेके आना है यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग कॉलम्स ओनली, राइट? सो द फर्स्ट स्टेप विच आई सी इज द चेंजेस विल बी इन कॉलम 1. इट विल बी द लैटरल मूवमेंट. नाउ रो में ऐसा ऊपर नीचे वर्टिकल मूवमेंट होता है, कॉलम्स में इट विल बी लैटरल मूवमेंट. एंड कॉलम 1 विल बी, द चेंज इन कॉलम 1 विल बी cos theta into column 1 minus sin theta into column 2. Cos theta into column 1 minus sin theta into column 2. So A inverse into, हम लोग को जो चेंजेस मिलेगा वो खाली फर्स्ट कॉलम में मिलेगा. ओके, सो जो चेंजेस मिलेगा वो फर्स्ट कॉलम में मिलेगा. द चेंजेस आर, वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट. ओके, सो 1 कॉलम 1 इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ऑलरेडी इधर माइनस साइन थीटा है, एंड दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू गेट कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर. आई रिपीट, cos into cos square minus sin into minus sin is cos square plus sin square आपको मिलेगा. And then we next have is cos into column 1 is cos into sin minus हम लोग को sin into column 2 करना पड़ेगा, so sin cos, cos sin minus sin cos, and यहाँ पे 0 आएगा, 0 minus 0. We have minus sign, we have cos, we have 0, we have 0, 0, 1, वो as it is copy हो जाएगा. Here what all changes you will have? You will have cos theta multiplied to 1 minus sin theta into 0, cos theta multiplied to 0 minus sin theta into 1 is 0 minus sin theta is minus sin theta, and यहाँ पे 0 minus 0 0 रहेगा. Then we have 0 1 0, then we have 0 0 1. Okay, so that is how it is going to look like after applying the column transformations. Next, A inverse, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0 minus sin cos 0 0 0 1 equal to, we're going to have cos minus sin 0 0 1 0 0 0 1. Okay, so that is the idea. Okay, next क्या करना है हम लोग को? Next what we have to do is using this one which we have got, हम लोग को साइडवेज यहाँ पे 0 करना होता है, राइट? सो दिस कॉलम 2 माइनस साइन थीटा जो है हम लोग को वहाँ पे मिला है, उसको हम लोग 0 करेंगे. कैसे? वी कैन से कॉलम 2, द चेंज इज इन कॉलम 2 एंड इट इज कॉलम 2 प्लस साइन थीटा इनटू कॉलम 1.
सो इसमें खाली कॉलम 2 चेंज हो रहा है, बाकी कॉलम्स एज इट इज है. सो 1 0 0 वी हैव इट. 0 0 1 है हम लोग के पास, इक्वल टू यहाँ पे आएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा 0. देन वी हैव 0 0 1. Okay, column 2 plus sin theta into column 1. So we have minus sin theta plus sin theta. 0. Cos theta plus 0 into sin theta remains cos theta, remains unchanged 0. यहाँ पे आ जाएगा हम लोग को 0 plus sin theta into cos theta. 0 plus sin theta into column 1. 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा. ओके, एंड लास्ट में यहाँ पे 0 ही रहेगा. 0 प्लस साइन थीटा इंटू 0, 1 प्लस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा विच इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सो दिस आर द चेंजेस वी हैव हियर. 0 कॉस 0 एंड यहाँ पे हो जाएगा साइन कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर एंड 0. जस्ट लाइक रो ट्रांसफॉर्मेशंस सेम चीज़ हो रहा है यहाँ पे. अभी अपने पास यहाँ पे है ए इनवर्स के साथ 1 0 0 0 cos 0 0 0 1, and what we are going to do is we are going to have here is sin theta cos theta 0 minus sin theta cos square theta 0 0 0 1. Next is we can say by changes in column 2 and you can have column 2 divided by cos theta. column 2 अगर आप cos theta से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे अपने पास बन जाएगा I 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड सामने हम लोग को मिलेगा cos theta माइनस sin theta 0 0 0 1. You divide by cos theta, you get sin theta cos theta 0. Okay, so what we see here is this is I, right? So what is A inverse, right? That is, if that is I, then the final answer we can say is A inverse into I is A inverse, and A inverse is cos theta sin theta 0 minus sin theta cos theta 0 0 0 1. Okay, so that is how it is solved. And if you see by column transformations, you are getting the same inverse. The same inverse you will get by also row transformations, column transformations, row transformations, दोनों में सेम ही इनवर्स आना चाहिए. अब कोई भी मेथड से फाइंड करो. अभी हम लोग तीसरा मेथड सीखने वाले, दैट इज एडजॉइंट मेथड. उससे भी ए इनवर्स सेम ही आने वाला है, बिकॉज देयर इज ऑलवेज an unique inverse to the matrix. If the inverse exists, then the inverse is unique, right? So we can see the previous solving in which I showed you that A inverse is, ये हम लोग ने रो ट्रांसफॉर्मेशन से किया था, cos theta sin theta 0 minus sin theta cos theta 0 0 0 1, and the same you're going to get it here. Okay, this is by column transformations. This one is by row transformations. This is by column transformations. Inverse is unique. Whichever method you use, you are going to get the same inverse. Okay.